Okay, so today it's lecture number 24 and we are starting PHP. Okay, so this is the outline. We'll see some introduction, some idea about installation, then we'll start its syntax and various syntax related issues, how we use comments, variables, data types, operators, conditions, and loops, typical of any particular programming language. So, the most important aspect you should know is that PHP code is executed on the server. It means that it is a back-end programming language. It's a back-end programming language. Okay, PHP is a server scripting language and a powerful tool for making dynamic and interactive websites. PHP is a widely used, free and efficient alternative to competitors such as Microsoft's ASP. Then PHP 8.0.6 released on 6 May 2021 is the latest stable release. Let me show you its homepage. This is php.net. php.net is the homepage. Here you can see that eight point zero six. Here on the right side 8.06, 7.4.20, 7.3.28. So these are current popular versions. There are some changes since 8.0.6 and for example PDO PGSQL is introduced in PHP 8.05 and 6. And if you go on the download, so you can see that PHP 8.06. If you want to download Windows version, then it is Windows download version. Then 7.4.20, it is again a stable release and Windows download is here. Then 3.2.8. So if, for example, I click on Windows download, then there are two categories. One is called non-thread safe category and the other one is thread safe category. So what I have seen that mostly the peoples for the beginners, it is recommended to use non-thread safe category. You can download the zip file for Windows. It is a Windows page. So you can download a zip file for a window. For example, I have downloaded a zip file. This is a zip file which I have downloaded. PHP 8.0.6 non-thread safe. NTS means non-thread safe. If I open it, it is a zip file. So you'll see a structure. This is important, php.exe and php.ini.
production INI development, and I have unzipped it and placed it in this folder. I have changed the name of the folder, and here after unzipping you will find php and php ini. INI has all the information about its structure. That's a big file. So often you will find the installation, during installation, that you have to make some changes in the INI file. So a lot of information is in this INI file. Some tutorials are generally needed to get help if you get stuck up in some installation issues. Okay, then in a Visual Studio I have installed a few extensions. For example, I have installed a PHP server. This is a PHP server. If you install this server, then you don't require IIS, that is Internet Information Server, because it is a full-fledged server, and from this Visual Studio Code, directly a page can be sent to this particular server. So some some guidelines are there. Then I have also downloaded another extension. It is PHP debug, just to create an environment of debugging for PHP. It is providing for installation. It is providing some lot of instructions. So you'll find a lot of information is there for installation of debug environment. Okay, then this is okay. Now another thing, for example, if I want to run a console, here you can see it is command line. So if I write path, do you know what is path? Anybody from the class? What we find from the path? क्यों जी, path क्या होता है? सर डायरेक्टरी। हाँ, ये आपने डॉस पे कुछ काम किया हुआ है थोड़ा बहुत, कमांड प्रॉम्प्ट पे? नो सर। ये जो CMD प्रॉम्प्ट होती है, इस पे काम किया हुआ आपने कि नहीं किया हुआ? नो सर। कोई आइडिया है, मोटा मोटा आइडिया है कि नहीं है? ये आपको इसका पता होना चाहिए। बेसिकली ना विंडोज़ के अंदर आप सारा काम जो आप विंडोज़ से क्लिक करके कर रहे होते हैं, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये अभी ये चीज़ें बता रही है, थोड़ा सा मैं इसको इंट्रोड्यूस कर दूंगा आपको। पहली बात तो है कि यहाँ पे आप लिखते हैं CMD, ये कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ CMD लिखते हैं तो खुल जाती है। अच्छा, ये बेसिकली इट इज़ शोइंग the structure of our folders. For example, at a moment I am in C drive, subfolder users and subfolder Farooq Azam, and here I can go through Windows environment as well. This is C, then users, then Farooq Azam. So currently I am here. So if I write directory, it means it will list all the files in this folder. Here you can see there are various files. There might be subdirectories or some files.
कुछ फाइल्स भी हो सकती हैं, जैसे ये माई फर्स्ट JS पड़ी हुई है, यहाँ पे माई फर्स्ट मॉड्यूल JS पड़ी हुई है। ठीक है, कोई डायरेक्टरीज भी पड़ी हैं। डायरेक्टरीज मीन फोल्डर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ब्लू जे फोल्डर, डायरेक्टरी है ब्लू जे। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे यहाँ भी ब्लू जे नज़र आएगा। आई प्रेस बी, ये ब्लू जे नज़र आ रहा है। दिस ब्लू जे इज़ अ फोल्डर एंड देन इट हैज़ वेरियस फाइल्स। ठीक हो गया। अब होता ही है कि बहुत सारी फाइल्स पूरे डायरेक्टरीज में कहीं भी कोई फाइल पड़ी हुई है। While staying in this directory, how can I find or access any particular file? तो फॉर एग्जांपल एक फाइल पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पड़ी हुई है डाउनलोड में, यहाँ पे कोई फाइल पड़ी हुई है मेरी डाउनलोड पे, मैंने ये फाइल एक्सेस करनी है या उसको रन करना है मैंने, और मैं इस फोल्डर में हूँ। तो मैं अगर मैं इस फाइल का नाम लिखूंगा तो इट विल नॉट रन, बिकॉज that the path for that file is not declared। तो पाथ डिक्लेयर करने के लिए पाथ कमांड यूज की जाती है। तो ये डिफरेंट पाथ्स दिए हुए हैं डिफरेंट डायरेक्टरीज में। तो अब इन जितनी भी डायरेक्टरीज हैं इनके अंदर कोई फाइल पड़ी होगी तो मैं यहीं से लिख के मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेट मी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल calc.exe, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। ये देखें कैलकुलेटर है, यूज़ किया है विंडोज़ पे आपने, मैंने यहाँ पे calc.exe लिखे, खुल गया है। लेकिन क्यों खुल गया है? इसलिए खुल गया कि ये ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है कि वो पाथ यहाँ पे डिफाइंड है, इसलिए इसे ढूंढ लिया ये वाली फाइल और खोल दिया। सो दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ पाथ। अब पाथ हम कहाँ से डिफाइन कहाँ से करते हैं, डिक्लेयर कहाँ से करते हैं? सो वी फाइंड, वी गो, वी, मैंने लिखा है env। इनफैक्ट आई वांट टू गो टू इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल का एक विंडो खुल गई है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इन्वायरमेंट वेरिएबल। And here one is environment variable for Farooq Azam, the user, and requirement variable for system variables. So the system variables are available to all the users, whereas the upper variables are only available to Farooq Azam user. So out of these environment variables, we have a path variable as well. If I click edit, you'll find all these paths are already saved here. For example, one path is Python C, Python 39. Then another recently added path is PHP 8.0.6, F 8.0.6. So as I already told you, this is a folder. So I have given a path in a folder so that at any particular location, if I want to execute any of the file in this folder, I can execute it because the path is available. So if the system will go, if system will not find the file in current folder, then it will start finding the file in the provided paths। जैसे सारे पाथ दिए हुए हैं, फिर यहाँ ढूंढेगा वन बाई वन, जहाँ भी मिल गया उसने वो फाइल खोल देगा। तो इस एनवायरनमेंट वेरिएबल में हम पाथ वेरिएबल इंपॉर्टेंट होता है सेट करने के लिए, तो वो PHP के लिए भी करना पड़ता है। अब मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिया है, इसका मतलब है कि मैं एक फाइल है इसके अंदर PHP फाइल, ये जो php.exe फाइल है, I want to execute this file. That's why I have given the path variable. अब मैं इस path फाइल को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। So for example, I am in some folder, but it is not that folder.
It's not F. It's a different folder. It is F PHP 8.0.6, but I am currently in inet www.root.pub. If I write php space and then I give name of a file, for example, singletext.php, single text.php, then this file should execute because first of all you give some command php and this file has to now execute with this php file .exe file. So let's see what it says. Could not open file single text.php. सर उसका नाम स्ट्रिंग टेस्ट अच्छा गलत लिख दिया मैंने, स्ट्रिंग टेस्ट मैंने क्या लिख दिया, मैंने सिंगल टेस्ट लिख दिया, यस स्पेलिंग ही गलत है. गुड, दैट्स गुड, आपने बड़ा अच्छा स्ट्रिंग स्ट्रिंग इस वक्त क्लास शाम को क्लास लें तो ऐसे ही होता है. स्ट्रिंग टेस्ट डॉट पी एच पी. ओके, ये फाइल है और ये आप देखेंगे कि दिस फाइल हैज़ बीन रिटर्न. ये फाइल रिटर्न हो गया, मतलब ये फाइल एग्जीक्यूट कर दी है उसने. क्यों एग्जीक्यूट कर दी है? वजह ये है कि जो स्ट्रिंग डॉट टेक्स्ट पी एच पी है ये करंट फोल्डर में पड़ी है. करंट फोल्डर कौन सा है? ये वाला है www.php. और ये जो फाइल है php फाइल ये F ड्राइव में पड़ी हुई है, इसलिए वहाँ से php फाइल ढूंढ लिया है और ये वाली फाइल यहाँ से ढूंढ लिया है और ये इसको php को कमांड लाइन से रन करने का किसी भी फाइल को रन करने का ये तरीका है, तो इसने इसको रन कर दिया है. ठीक है जी, तो ये जस्ट टू गिव यू द आइडिया अबाउट सम द कमांड प्रॉम्प्ट एज वेल एज द पाथ वेरिएबल. And also I have told you that I have installed PHP server and PHP debug. Okay, now if I want to make use of the server, then I'll press function, press F1. Here you will find, since I have installed PHP server, so it is written PHP server open file, open file in browser. So here the file has been opened in a browser. Here you can see localhost and port number 3000, and then string test.php file has been executed. So as we were discussing, somebody asked what is port. Here you can see there is a port number. So if you can run multiple web servers on a single machine, but then you have to distinguish between with the different machine with some ports. क्योंकि मेरा IIS भी लोकल होस्ट से खुल सकता है, तो फिर यहाँ से अपने पोर्ट नंबर डिफरेंट कर दिया, और इसलिए अभी जो एक और सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल किया मैंने, उसने लोकल ब्राउज़र में ये खोल दिया फाइल. लेट मी ओपन अनदर फाइल. ये वाली फाइल मैं खोलता हूँ. I press F1, open file in a browser. Here you can see that I have already set Shift P. With Shift P, it should also execute. Let me press Shift P. Shift P. So here you can see another. The other file has also been executed. It's a standard file just to test whether PHP is properly installed or not. Here you can see loaded configuration file is F directory PHP 8.0.6 php.ini. Then some configurations are written here, and so on, and many other things are there.
So this half window is Visual Studio and half window is the browser. Let me once again, I can also refresh it from here because I've already opened it, and this is here. Localhost at 3000 port. So this PHP info information basically creates this whole folder. इस फाइल के अंदर सिर्फ ये एक लिखा है PHP info method, तो इसने पूरा एक वेब पेज बना दिया है, पूरा उसने बता दिया कि क्या क्या है क्या नहीं है. Okay, so let's move forward. So the PHP 8.0.6 is released on 6 May 21 is the latest stable release. PHP is acronym for PHP Hypertext Preprocessor, and PHP is widely used open source scripting language. PHP scripts are executed on server, and PHP is free to download and use. PHP file can contain text, HTML, CSS, JavaScript and PHP code. यानी कि .php एक्सटेंशन की अगर कोई फाइल होगी तो उसके अंदर ये सब मिक्सअप कर सकते हैं कोड. अपना HTML भी डाल दें, CSS भी बीच में डालें, JavaScript भी सब डाल दें बीच में. It will take all that. PHP code is executed on server and result is returned to the browser as a plain HTML, and PHP file have extension .php. What can PHP do? PHP can generate dynamic page content. It can create, open, read, write, delete, close files on server. PHP can collect data. PHP can send and receive cookies. PHP can add, delete, modify data on your database. And PHP can be used to control user access. And PHP can encrypt the data as well. Why PHP? PHP runs on various platforms like Windows, Linux, Unix, Mac, etc. PHP is compatible with almost all the servers used today, for example Apache and IIS. PHP supports wide range of databases, and PHP is free, and PHP is easy to learn and runs efficiently on server side. Regarding installation, I have already given you the idea. I have downloaded it, unzipped zipped file, then zip file was unzipped, placed somewhere, then a path, its path was set, and then after setting path, the advantage we get that we can execute that PHP folder gets visible from anywhere in the computer, and then we can execute with some php.exe files any particular php files. Okay, then syntax. PHP script is executed on server and a plain HTML result is sent back to the browser. अच्छा, अब ये देखें, अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ एंड आई ओपन सोर्स, अच्छा यहाँ पे देखें कि ये इसका कोड देखें जरा. ये इसमें कुछ ना कुछ मैंने PHP का टेक्स्ट डाला हुआ है, PHP इको और वेरिएल डाउन फला 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 फला, मतलब यहाँ पे भी आपको PHP
टाइप कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये फाइल पूरी जाती है सर्वर पे और सर्वर से HTML रिटर्न होती है। तो अब जो रिटर्न हुआ है वो ये रिटर्न हुआ है प्रोसेस होके। इसमें इसमें फाइल में फ़र्क है, ठीक है। इसमें PHP का कोड है, इसमें PHP का कोड कोई नहीं है, और सारा कोड उसने प्रोसेस करके प्लेन HTML वापस किया है सर्वर ने। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, डिफरेंट। ये PHP का कोड नहीं आ रहा वापस सर्वर से, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो ये बात हो रही है यहाँ पे कि PHP स्क्रिप्ट is executed on server and plain HTML result is sent back to the browser. So what is the basic PHP syntax? PHP script can be placed anywhere in the document. The PHP script starts with less than question mark PHP starting tag and ends with question mark closing tag. So within these tags, you have to write the PHP code. The default file extension for PHP file is .php. Let's see the first example. So if you want to display something on the browser, you need to use echo keyword, or you can also use a print keyword. But here we are using echo. So echo, then there is some string, and the same is returned here. Echo, hello world. ठीक है, बाकी H1 heading is just like HTML. Any question on this particular syntax? ये जो PHP का पहला कोड आया है, फर्स्ट लाइन, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। PHP keywords like if, else, while, echo, etc. classes, functions, user-defined functions are not case sensitive. ठीक है, it is different than C और JavaScript. PHP में ये जो चीज़ें हैं, जो keywords हैं, ये case sensitive नहीं होते. On the other hand, variable names are case sensitive. तो फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं इको, मुख्तलिफ कैपिटल के साथ इको लिखा, टोटल स्मॉल के साथ, पैरेलल केस के साथ, all three are going to execute because it's a keyword. And here you can see there is a variable name. Variable name actually starts with the dollar sign. तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं कलर के नाम से, डिक्लेयर कर रहे हैं कलर के नाम से, और मैं यहाँ डॉलर से पता चलेगा कि ये वेरिएबल है। तो स्मॉल कैप्स में कलर लिखा है हमने। अगर मैं ये अब स्मॉल कैप्स में इको लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे स्मॉल कैप्स में लिखता हूँ मैं कलर, वेरिएबल का नाम, फिर फुल कैप्स में, फिर डिफरेंट कैप्स में, तो अब इसमें से सिर्फ ये जो है जो मैच करेगा केस, सिर्फ वही वाला इको एग्जीक्यूट करेगा। माई कार इज़ रेड, सो इट हैज़ रिटर्न रेड, जबकि इन दोनों ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। माई कार इज़ ब्लैंक, माई कार इज़ ब्लैंक। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? जी कुछ बोलें, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नो सर। आवाज़ तो आ रही है ना? यस सर, आ रही है। नो क्वेश्चंस। PHP commands. This is a single line command just like C, and this is another way of writing a command with a hash.
sign. You can also write a single comment like this. So little bit of difference as well. Okay, so again a multi-line comment, just like C. This is a single line comment, and here there is something interesting that within a statement you can insert a comment. So it is effectively 5 plus 5, but this plus 15 is going to be ignored by the compiler. Any question here? You can see we are declaring a variable with the $x, and then we are printing $x with echo. Okay, now variables. Variables are containers for storing information. A variable can have a short name like X and Y, or a more disruptive name like age, car name, total, volume, etc. Rules क्या हैं variables के? Variable starts with a dollar. Excuse me. Variable starts with $sign followed by the name. Then a variable must start with a letter like JavaScript. Then variable cannot start with a number. Then variable can have alphanumeric characters and underscores. And variable names are case sensitive. So these are some of the rules while you are defining variable. Okay, we take a break here. After it is 5:39, at 5:50 your quiz will start, and uh, then from 6 onward we will resume our lecture. So your quiz will